and use it for your glory, Lord. In the name of Jesus, amen. 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 Share my screen. And use it for your glory, Lord. Amen. In the name of Jesus, amen. 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 Why is it so late? Share my screen. What happened? Well, I'm just now hearing everything I said. Yeah, because you're live. And I mute that tab. Okay. All right. Well, we're in we have finished Genesis, we're in Exodus, and the Pentateuch changes now. We've gone from talking about God dealing with the whole world to zooming in where God deals with one person. और आपको याद है कि हम शुरू हुए थे कि खुदा ने दुनिया को बनाया और उसके बाद खुदा जो है वो पूरी दुनिया के मामलात के बारे में बात करता है और उसके बाद अब हमने ये देखा कि खुदा जो है वो सिर्फ एक शख्स से बात कर रहा है. And Exodus divides into two parts. और उसमें एक हमने पहले ये भी देखा था कि खुदा जो है वो the first half, 1 through 18, is getting Israel out of Egypt. और खुद हमने ये भी देखा था कि खुदा जो है उसने जो है वो पूरी उसके बाद खुदा जो है वो एक खानदान से बात करता है. अब वो खानदान से खत्म होकर जब वो खरूज के अंदर आते हैं तो खुदा एक शख्स से बात कर रहा है और पहले 18 बापों में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इस मिस्र से बाहर निकले. Okay. You said a lot for one sentence. Okay. Yeah, actually I missed something in your previous okay. And the second half is them wandering and getting to Mount Sinai. They get to Mount Sinai, and then they get the law. And it's all about the giving of the law. और दूसरे हिस्से में जब हम जाते हैं 19 से 40 तक तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो मूसा कोहे सीना पर जाता है और वहां पर 10 हुक्म उसको मिलते हैं और उसके अलावा दूसरे हुक्म भी खुदा उसको देता है, लेकिन जो 10 हुक्म थे वो पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिखे हुए थे जो कि खुदा की उंगली से लिखे हुए थे. And the book of Leviticus is detail on those laws. Not all of them, but he goes through quite a few, and he specifically the sacrificial system, and he's going to detail that. And then in Numbers, well, you can do that. Okay. और अखबार जो है उसकी अगली किताब है. अखबार जो है वो दरअसल उन कवानीन के मतलब थोड़ी तफसील बताती है और उन कवानीन को भी बताती है और ख़ास तौर पर जो पहले अबवाब हैं 7 उसके अंदर जो किस तरीके से कुर्बानी जो है वो जानवरों की जब दी जाती थी तो वो किस उसके क्या तरीका कार है. और उसके बाद हम मुख्तलिफ और जो कानून खुदा ने दिए कि किस तरीके से पाक रहना है, किस तरीके से कफारा का दिन है और ये तमाम बातों को बताया गया. They're still on Mount Sinai when Leviticus is taking place. And it's in Numbers where they take off. And we go through all the wilderness wanderings and all that's in the book of Numbers. और खरूज की किताब जब हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो शरीयत को ही बहुत ज्यादा जो है वो बताया गया, लेकिन जब और वो तमाम के तमाम जो शरीयत बताएगी तो वो कोहे सीना के पास ये तमाम चीजें हुई. लेकिन जब हम गिनती की किताब में देख जाते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा दोबारा बनी इस्राएल को जो है वो चलने के लिए हुक्म देता है. And then Deuteronomy is a farewell speech. They're at Moab, which is across the Jordan River from Israel, and Moses is about to die. And so Deuteronomy is the speech he gives to Israel right before he dies,
where he kind of reiterates everything. He goes over the law a second time. Hence the name of the book, Deuteronomy, which is Greek for second law. और जो इस्तिश्ना जो है उसमें हम देखते हैं कि मूसा का खिताब, क्योंकि मूसा जो है हम नजर आता है इस किताब के अंदर कि वो किस तरीके से वफात पाता है, और इसके अलावा मूसा अपने खिताब के साथ साथ जो है वो तमाम का तमाम जो कानून है उसको, शरीयत है जिसको, उसको दोबारा बताता है। और Sharia? शरीयत, या इट्स लाइक लॉ, शरीयत। Yeah. और जो इस्तिश्ना का मतलब जो इंग्लिश के अंदर है वो है ड्यूटोनॉमी का मतलब होता है दूसरा कानून, या दूसरी मर्तबा शरीयत का बताया जाना। All right. So we are in Exodus, and we've had we'll just start over on it, but we're going to get the birth of Moses, the whole burning bush thing, and his wandering around. All of this is setting up the plagues and the Passover in Exodus, which takes place in one chapter, believe it or not. और हम देखते हैं पहले कि किस तरीके से खुदा जो है वो इसराइल को मिस्र से निकालता है। उसके बाद हम उसमें ये भी देखते हैं कि सबसे पहले जो खरूज की किताब में हम देखेंगे किस तरीके से खुदा इसराइल को मिस्र से निकालता है, और हम ये देखते हैं कि मूसा की जो है वो पैदाइश होती है। उसके बाद मूसा कैसे जो है वो जो फारून से भागता है, और वो जो बर्निंग बुश का जो है, क्या उसको बोलते हैं, जलती जो झाड़ी का वाक्य है वो, और बाकी जो चीजें हैं कि वो तमाम अभी हम इसको इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। Okay. So Exodus 1 opens with, these are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob. और जब हम खरूज की किताब पढ़ते हैं तो वो शुरू होती है कि ये इसराइल के बेटों के नाम हैं जो कि यकूब के साथ मिस्र में आए थे। Okay, when we ended Genesis, Joseph, died. And then we jump and we get, because it's 200 or 300 years later, and the text has to tell us about that. It says, what's happened in the intervening years? Well, these are the names of the people that came to Egypt with Jacob, and it's the 12 tribes. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. तो हम पैदाइश के आखिरी हिस्से के अंदर देखते हैं कि यूसुफ की जो है वो जब मौत वाक़या होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये तमाम खानदान जो यूसुफ के जो भाई थे वो सब के सब मिस्र में जब अनाज लेने के लिए आते हैं तो वो वहीं रह जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं तकरीबन 300-400 साल का ये सारा अरसा है, और उन यकूब के उन बेटों के जो नाम जो हैं वो दोबारा दर्ज किए गए इस किताब के अंदर, जो कि रूबन, शमून, लावी, यहूदा, अश्कार, ज़बूलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद और आशर है। And you'll notice that Joseph's not on the list. It's the two sons, Ephraim and Zebulun, that took its place. So, so there's, go ahead. और आप ये देखते हैं कि जो यूसुफ जो है वो इस लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो अफ्राइम है उसका नाम जो है उसकी जगह पर यहाँ पर मौजूद है। You remember this story back in 48 of Genesis, where we got the और आपको पैदाइश
40 बाब के अंदर हमने Ephraim and Manasseh. I'm sorry, I got the names wrong. हाँ, और हमने जो 40 बाब के अंदर जो है वो मनिस्सा और इफ्राइम की जो बारे में वो सारी कहानी पढ़ी थी, आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं 48 बाब को, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या बात होगी। All right. So one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There's only 11 names listed because Joseph's the other one. Except Yeah. that, yeah. So he didn't put Ephraim and Manasseh in there. All right. Then So- Joseph dies. And the whole point is Israel starts multiplying, as you know. And as he puts it, the land was filled with them. और आपको पता है कि ये जो 70 जानें थी, ये जब मिस्र के अंदर आई तो ये बढ़ना शुरू हो गए, और जो मिस्र की पूरी जमीन थी वो इनकी वजह से ये बहुत ज्यादा कसीरुल तादाद हो गए और पूरे मिस्र के अंदर ये फैल गए। Rats. I was trying to find my the timeline thing. Well, I'll take a second. This is what I want. Oh well. Okay. I'm sorry. I don't have it readily at hand. All right. So it's not very long. So we're about the year 1500 BC, 200 years so after Joseph. And a new king rises up over Egypt. We know this story. He doesn't know Joseph. And remember, Joseph's a hero for Egypt because he came up with the whole system of surviving the famines. And but now this Pharaoh rises and said, the Israelites are too much. They're going to turn on us if we ever get attacked. And so we got to turn them into slaves. And they built for Pharaoh 2 cities, Pithom and Ramses. और जो which chapter we are in? तो हम chapter 2. I mean chapter 1. तो हम ये देखते हैं कि ये जो है काफी ज्यादा तादाद में हो गए थे, और एक और नया जो है वो बादशाह मिस्र के अंदर आया, और उनका जो खिताब होता था वो फारून ही होता था। उसको जो है वो इनके यूसुफ के बारे में उसको शायद उसको नहीं था पता, तो उसने कहा कि ये तो बहुत जो इसराइल के जो इसराइली जो हैं वो तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो उसने क्या किया, उनको पकड़ा और उनसे बेगार लेना शुरू किया। बेगार का मतलब होता है कि आप रोटी पानी देते हैं और काम करवाते हैं।
तो उसमें देखा कि वो बहुत ज्यादा सख्त काम उनसे लेता था, और उसके जरिए से उसने क्या किया था कि 2 शहर जो है, पतमूम और रिसियुतीम बनाए, इन इन मिस्रियों के को इस्तेमाल कर। So we know the story here. Pharaoh tells the midwives and names 2 of them and says, if a baby boy is born, you kill it. If it's a baby girl, you can let it live. But they feared God and didn't do it. And then he says, what are you doing? Why haven't you killed them like I told you? And he said, well, the women are too healthy. They give birth before we can get there. और जब हम इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बादशाह है मिस्र का, वो अबरानी दाइयों को, ये जिसका नाम, एक का नाम सफरा है और दूसरे का नाम हुआ था, उनसे कहा कि जब भी कोई लड़का पैदा हो इसराइलियों का, या उनको अबरानी कहा जाता था, तो वो उसको मार डालें। लेकिन वो दोनों जो दाइयां थी वो खुदा से डरती थी, उन्होंने बादशाह का हुक्म नहीं माना। और जब बादशाह ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये जो औरतें हैं ये तो काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि ये जब इनकी जो है वो बच्चा जन्मने का वक्त आता है तो ये दाइयों से पहुंचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो इसलिए उनके पास ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि वो बच्चे को मार सके। Now, the last verse of chapter 1 has a commandment from Pharaoh. Every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. Well, we're about to have a boy, and he's going to be, in fact, thrown into the Nile, but he's going to come back to haunt Pharaoh. और हम ये देखते हैं कि जो फारून जो है पहले बाब की आखिरी आयत 22 आयत के अंदर एक हुक्म देता है, और वो कहता है कि जितने भी अबरानियों के बच्चे पैदा हों, बेटे पैदा हों खास तौर पर, तो उनको दरियाए नील के अंदर जो है वो फेंक दिया जाए, लेकिन जो कोई बेटी पैदा हो तो वो उसको जीता रखे। And notice this is a little note that he calls them the Hebrews. Hebrews is a term that foreigners use for Israel, and Israel only uses Hebrews when they're talking to foreigners. Amongst themselves, they call themselves the sons of Israel. And Hebrew is the term they use with outsiders. तो अबरानी जो है वो दरअसल एक ऐसी टर्म है जो तब ही इस्तेमाल की जाती थी जब कोई गैर यहूदी लोग शख्स या गैर इसराइली जो है वो बात करता था इसराइलियों के मुतालिक, तो वो उनको इसराइली नहीं बल्कि अबरानी कहता था। और इसी तरीके से जो जो जब ये इसराइली आपस में जब बात करते थे तो ये अपने आप को इसराइल की औलाद कहते थे। Now, you guys can see my screen, right? Yeah. Okay. I'm just making sure we haven't had a mess up. Mm. So we know what happens. A Levite man marries a Levite woman and they have a child. And according to the commandment, the child should be thrown into the Nile and killed. But instead, she hid him for 3 months. And when he was getting too big and she couldn't hide him anymore, she makes a basket that waterproofs it and puts the child in it, and then gives it to his sister and says, take it down to the Nile. But we're not going to throw him away. We want you to wedge it in the reeds along the bank in a place where a rich woman will come along and find him, a rich Egyptian woman, because the women would bathe in the Nile. तो And so that's what happened. अब जो है कहानी जब आगे बढ़ती है तो जो इसराइल के 12 जो बच्चे थे, 11 एक जिसकी डेथ हुई, तो उसमें से हम ये देखते हैं कि जो लावी के घराने का
एक शख्स था जिसका एक बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि उस औरत ने जो है उस बच्चे को देखा कि वो बहुत खूबसूरत है, तो 3 महीने तक जो है उसको छुपा के रखा। और जब 3 महीने तक उसको छुपा के रखा, तो उसके बाद क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था, तो उसको वो छुपा कर नहीं रख सकती थी, तो उसने एक टोकरी ली और उसके अंदर राल लगाई ताकि वो उसके अंदर पानी ना जा सके। और वो उस अपनी बेटी को कहती है कि तू जाकर इसको दरिया के किनारे जहाँ जहाँ पर जो है उस दौर के अंदर जो अमीर औरतें थी वो दरिया के अंदर जाके नहाती थी, तो कहते थे कि उस जगह के उस एरिया के अंदर जो है इसको छोड़ देना। और वो जो है वो बेटी उसकी ऐसा ही करती है। So she takes the sister, who we'll later learn is Miriam, takes the basket down and wedges it in the reeds. She's not setting it adrift. She's putting it down there where a place where she knows it'll get seen. And sure enough, Pharaoh's daughter comes down to take a bath, and she sees it, sends her maidservant to go grab the basket and bring it to her. And when she opens it, there's a baby crying. And she looks at it and she can tell, she says, this is one of the Hebrew children. We know that the Hebrews look different than the Egyptians. In Egyptian art, they paint themselves differently than the surrounding peoples. So she could just look at the baby, and physically he looked different than Egyptian. She recognized it as a Hebrew child. तो हम ये देखते हैं कि जब जो फ़ारून जो था उसकी बेटी दरिया पर आती है, तो अपनी सहेलियों के साथ वो दरिया के किनारे टहलती है, तो वो वहाँ पर देखती है कि एक जो है वो टोकरा पड़ा हुआ है, तो अपनी सहेली को कहती है कि जाकर उसको उठा ले। और जब वो देखते हैं तो उसके अंदर वो एक बच्चा होता है, तो वो देखकर एकदम पहचान जाते हैं कि ये जो है वो अबरानी बच्चा है, क्योंकि जो जो मिस्री हैं वो अबरानियों से दिखने में काफ़ी फ़र्क होते हैं। Now, I want to show you something about the way the Bible tells stories. So, up in verse 4, we told his sister stood at a distance to see what was going to happen to the baby. And then we get the whole thing about the Pharaoh daughter and all her servants walking down with her. This is not done on a secluded spot. There's traffic there. Now, granted, it's a place where the women come to bathe. So, no biggie. I mean, there's going to be lots of people. But notice that when she opens the basket, his sister says to Pharaoh, daughter. So the narrator doesn't bother telling us about how she managed to be there. Last time we saw her, she was standing away. And then all of a sudden, she's right next to the Pharaoh and is talking to her. The narrator doesn't bother to tell us how she moved because it's not necessary. And so the narrator tells us stuff we only need to know for the story to progress. तो आप ये अपने ज़हन में रखें कि जो बाइबल की कहानियाँ हैं वो इस तरीके से लिखी जाती हैं कि तमाम तफ़सील उसके अंदर मौजूद नहीं होती। वही जिसकी जो है वो कहानी बताने वाला जो है वो ज़रूरत महसूस करता है। तो यहाँ पर आप देखें कि उसकी बहन जो है मूसा की, जिसका हमें बाद में नाम भी पता चलता है कि मरियम है, वो उसको जो है वो दरिया के ऊपर छोड़ती है और फिर उसको इंतज़ार करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो शहज़ादी जो है वो जब इधर दरिया पर आती है, तो वो एकदम दोबारा हम सीन देखते हैं कि वो जो फ़ारून की जो बेटी के साथ ही जो है वो बातें करना शुरू कर देती है। तो इसमें काफ़ी जो तफ़सील हम सोच सकते हैं कि वो उसके पास ही कैसे चली गई, क्योंकि वो बादशाह की बेटी थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो है वो बाइबल ऐसी तफ़सील नहीं बताती, वही तफ़सील बताती है जिसकी ज़रूरत होती है। Excuse me. Yeah. या You are
Yeah, we canceled that. Yeah, I canceled my account. I called it and talked to it so that you wouldn't be driving out here for no reason. I did my part for you, buddy. I'm sorry. Yeah, you're all good. You're all good. I apologize. Okay, well, I hope you have a good day. All right, Ken, sorry, I had somebody at the door. That's fine. Okay, so notice what happens. Pharaoh says, you're going to kill the babies by throwing them in the Nile. They put the baby in the Nile, and it comes back in his own household. Because she talks to the daughter, say, you want me to get a Hebrew wet nurse for you? Yeah, go. तो And अब she gets Moses' mother to nurse him for him. And so, let me get this out. There's a whole set of stories of how slaves outsmart slave owners. And this is an example of one of those. The very guy that says you got to kill them all, the baby ends up going back to its mother to be nursed and weaned. And this is an example of one of those stories. तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि वो मूसा की बहन जो है वो कहती है कि मैं इस बच्चे के लिए क्या कोई दाई लेके आऊं ताकि इसको पाल सके। तो ये एक आम जो था उस दौर के अंदर बात थी कि जो औरतें जो थी वो उनके पास स्लेव्स होते थे अपने बच्चों को पालने के लिए, जहाँ आज जैसे आजकल नानीज होती। I don't know what happened. Well, sorry, students, we just get up and leave whenever we feel like it. No. All right, I think I finished the sentence. Okay. All right. So again, so chapter 2, continuing, Moses is born. The Pharaoh's daughter names him Moses, which is an Egyptian word. And if you've heard of it's Moses, it's the part of an Egyptian name like on Ramesses, Ra Moses, or Thut Moses. And it so he has an Egyptian name. He's named by an Egyptian pharaoh. But as is typical of this, when they give it a Hebrew meaning so that he has a Hebrew counterpart. So in Hebrew, it's Moshe, and it means drawn out of the water. But in Egyptian, it's Moses, and it's incarnate. It means, so a name like Ra Moses or Thut Moses means the god Ra or the god Thut is incarnate. He's become a human. That's what the name means. And so there's a word play here. He's given an Egyptian name that they turn into a Hebrew name. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो उसकी बेटी जो थी उसने उसको अपना बेटा बना लिया और उनकी बेटी ने और उसका नाम जो है वो मूसा रखा। और जो कि एक जो है वो मिस्री नाम था। और जैसे कि जो है हमारे पास बाइबल के अंदर ये मौजूद नहीं है, हमारे पास सिर्फ मूसा लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि उसका नाम मोशे था, तो जिसका मतलब है कि एक जो मिस्री खुदा जो है वो जिस्म लेके आ गया। और जब हम इसी नाम को जो है वो देखते हैं अबरानी के अंदर, तो इसका मतलब ये बनता है कि जैसे कि पानी से निकला हुआ। We see the name Ramesses in the name of one of those storage cities they built. That's the name of a pharaoh, actually. And Ra is the Egyptian sun god. And then
the Moses part, which in Egyptian would be Moses, is incarnate. So Ra incarnate. तो आप पहले बाब की 11 आयत के अंदर जो 2 शहर बनाए गए थे, तो आप रेमसेस वहां पर एक का नाम देख सकते हैं, जो कि एक मिस्री जो है, मिस्री जो है बादशाह या मिस्री अपने आप को खुदा कहते थे, वो है। और रा जो है वो मिस्रियों के नजदीक जो है वो जो है सूरज देवता है। So Moses grows up, and the story is he's out and he sees an Egyptian overlord beating the Hebrew slave, which the text identifies as one of its people. This tells us something. और जब हम 2 बाब की 11 आयत तक आते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो मूसा जब बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर जो एक टर्म इस्तेमाल की गई है, तो बाहर जाता है अपने भाइयों के पास। तो क्योंकि अब्रानियों के पास उधर वो जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया है अपने भाइयों के पास जाता है, और वो देखता है कि उनके ऊपर किस तरीके से सख्ती की जा रही। Okay. That's again a lot for what I was saying. It's clear that Moses, even though he's raised in the palace, he's raised with Egyptians and the other children of the Pharaoh's daughters. He's different. He can tell that he's raised in the household, but everybody knows he's a Hebrew. He's one of them. So he has this kind of second-class status in his household or something. He's different. He knows that. And he recognizes his own people. And he sees an Egyptian beating him. And he kills him. And then he buried the guy in the sand. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मूसा है, वो जैसे शायद आप कह सकते हैं कि वो दूसरों के मिस्रियों की तरह नजर नहीं आता था, क्योंकि वो फर्क होते हैं अबरानियों से। तो जब वो बाहर जाता है, अपने भाइयों के ऊपर जुल्म होता देखता है, तो वो एक मिस्री को जो है वो मार देता है, और मार कर उसको वो जो है वो रेत के अंदर दबा देता है। Now, it's clear Moses has an anger problem. I mean, he just hauls off and kills the guy. तो आप And यहाँ we're पर going to देख see it. सकते आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मूसा है उसको गुस्सा बहुत आता है। आप देखें कि उसने एकदम क्या किया कि उसने जब एक ये देखा तमाम माजरा, तो उसने एक मिस्री को जान से ही मार दिया और उसके बाद उसको छुपा दिया। And we'll see this later when he gets mad and he strikes the rock with his staff instead of speaking to it, which is what God told him. So Moses has a temper. तो आप ये देख सकते हैं कि मूसा जो है उसको एकदम गुस्सा आता है। तो आप इसको शुरू से यहाँ से ही देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उसको मेरे ख्याल में एकदम गुस्सा आता है, because he was an Egyptian looking different Hebrew guy, so they may be bullying him every day. Yeah, we don't know. That story's hinting that his life was different. It was different. So he's not accepted by the Egyptians. He's not really accepted by the Hebrews. So you're a fancy Hebrew living in the palace, and you're a Pharaoh's son, a grandson or whatever. तो आप ये देख सकते हैं कि मूसा जो था वो ना तो अब्रानी रहा और ना वो मिस्री, क्योंकि वो जो है वो फारून के पोते की नवासे की बल्कि सूरत में जो है वो रह रहा था वहां पर। And I have this like, I mean, he was a prince, and then when he killed another Egyptian, why he is so scared? He like, Well, it's still murder. no, I Even a understand. prince can't just kill a guy. You gotta. We have this view of the ancient world that if you're nobility, you can get away with anything. Well, even in Egypt, you can't run around killing people for no reason. You can get arrested and stuff. And he's a Hebrew. He's not a true Egyptian. तो हम So ये he's देख सकते scared. हैं
कि यहाँ पर जो है कि मिस्र के अंदर कानून मौजूद था कि ये नहीं कि आप जिसको मर्जी जब मर्जी मार दे, चाहे आप जो है एक शहजादे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब मारता है तो उसको रेत में छुपा देता है, ज्यादातर इसलिए छुपाता है कि वो डर जाता And then the next thing sees two Hebrews fighting, and he breaks it up. And I said, "What? Are you going to kill us like you killed that other guy? Who made you a judge over us?" And Moses went, "Great. Everybody knows about this now." So he flees. And it turns out when Moses heard of it, he sought to kill Moses. है। Okay, so Moses fled from Pharaoh and went to the land of Midian. Let's look at a map so we can. तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है दूसरे दिन दोबारा जब मूसा जाता है बाहर, तो दो अबरानी आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वो जाके उनका जो है वो दरमियान उनकी सुलह शायद कराने के लिए जाता है। तो वो कहते हैं कि तुझे हम पर किसने हाकम या मनसब जो है वो बनाया हुआ है, क्या तू हमें भी मारना चाहता है जैसे तुमने उस मिस्री को मारा। तो एकदम जो है मूसा ये सोच कर डरता है कि अब तो हर एक को पता होगा कि मैंने कत्ल किया है, और शायद उन जो है वो जो मिस्र के अंदर कत्ल करने की सजा जो थी वो भी मार देना था। इसलिए जब 15 आयत में लिखते हैं तो लिखा कि जब फारून ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फारून के हुजूर से भागकर मुल्क मैदान में जा बसा, मैदान में जा बसा। Now, the history of Egypt is long. It's one of the first civilizations. And so we're not going to go into all that. But they're probably up here where the river fans out, the River Nile. It's called the Delta region. And they're probably up here. And Moses flees and he makes it across. And this is desert. Sinai is desert. It's just rock. And he flees all the way to Midian, which is over here. तो हम ये देखते हैं कि शायद ये जहाँ पर दरियाए नील के जो डेल्टास बन रहे हैं ऊपर आप देख सकते हैं, तो वहां से शायद ये तमाम वाकया हुआ, और वहां से जो मूसा जो है वो भागा, और आप देखते हैं जहाँ पर ये माउस का निशान है वहां तक जो है जो मूसा जो है वो पूरे एक रेगिस्तान से होते हुए मदियान के इलाके में पहुंचा। Now, remember when we went over how you met your future wife at a well? Well, this is a story that takes place now. Moses is fleeing and he's gone to a foreign land, Midian, and he sat down by a well. That sets it up for the readers. Why does the text bother to tell us he sat down by a well? It's to put it in the mind of the reader. Oh, this is where Moses is going to meet his wife. And we're going to have that story. हम ये देखते हैं कि अब जो 15 आयत के अंदर दो बाप के जब वो वहां से भागता है तो वो जाकर मदियान के अंदर एक कुएं पे बैठता है। तो ये जो है वो पढ़ने वालों के लिए इस तरीके से जो है वो लिखा जाता था कि एकदम उनको पता चले कि आगे जो है अब क्या हो। So we went over this when we went over that story type, but I want you to see how this material is set up to be told from memory. We have it in a written form, but it was originally told by word of mouth. Somebody had to tell these stories to get hand them down before they got written down. And so we have this thing in the audience, your children sitting by the fire as you tell them the story. They go, "Oh, we know what's going to happen. This is when he meets his wife." And sure enough, he does. The whole bit about scaring the shepherds away. And this is where he meets Zipporah, who's going to become his wife. And they get married. They have a son named Gershom. I'm a stranger there. That's what the name means. I'm a sojourner there. तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जो है वो उधर बैठता है, उसके बाद जो मदियान का जो काहन होता है उसकी बेटियां आती हैं, पानी भरने आती हैं, वहां पर उसको सफूरा मिलती है,
सफूरा से उसकी जो है शादी हो जाती है और उनका जो बेटा पहला पैदा होता है जिसका नाम जरसोम है, और जरसोम का मतलब है कि अजनबी मुल्क में मुसाफिर। And so it's not clear until the details are told later, but a lot of time has passed. In fact, Moses is 80 now. It turns out he was 40 when he killed the Egyptian and he fled. And now he's down in Midian and he's been here for 40 years. We'll figure that out when they tell us that Moses is 80. Right now, we just know it's a long time. And the king of Egypt dies, the Pharaoh that knew Moses. And the situation with Israel is getting worse because they're pressing them more and more. Their cry for rescue from slavery came up to God, and God heard their groaning. And God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. God saw the people of Israel, and God knew. और हम ये देखते हैं कि अब तकरीबन 80 साल का मूसा हो गया है और काफी अरसा हो गया है, और जो वो मिस्र का जो फारून था, जो बादशाह था, वो वाला मर जाता है, और जो बनी इसराइल है उनके ऊपर और ज्यादा जो जुल्म सितम शुरू होता है, तो उनका जो रोना है वो खुदा तक पहुंचता है। But this, we're getting down to the end, and the year is, it's in the 1400s now, and it's been well over 400 years since Abraham. That's a long time. And they've been slaves down there for centuries, not 100 years, at least 200 years, maybe 3. They've been slaves a long time, and God knew. और हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत लंबा अरसा है, और हम ये भी देखते हैं कि एक जो है वो नबूवत मौजूद है कि किस तरीके से 400 साल तक जो है ये मिस्र की गुलामी में रहेंगे, और वो नबूवत जब पूरी होती है तो खुदा जो है वो दोबारा लिखा है कि खुदा को तक उनका रोना पहुंचता है, और खुदा को वो वादा या अहद याद आता है जो उसने जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। Now the story goes on, and we're told Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, who's a priest of Midian. Priest of what deity, we're not told. But Moses is keeping the flock. I don't know how it is in Pakistan, but in the Middle East, in Israel and stuff, keeping the flocks, it's something a child does. It's a low level job. So Moses has this father-in-law who gives him a job to keep the sheep. And if he's a priest, it's not clear, but it doesn't look like Moses is getting a whole lot of respect from his father-in-law. If the job he gives him is keeping the flock. और यहाँ पर जो है मूसा का जो ससुर है, जो कि मदियान का काहिन है, और ये नहीं बताया गया कि मदियान के अंदर किस खुदा को माना जाता था, लेकिन वो एक उस देवता का काहिन था। लेकिन यहाँ पर जब मूसा है उसके पास एक बहुत ही छोटी जो है वो एक काम है, जो ये सारा इलाका है जिसमें इसराइल और अरब का इलाका है, तो वहां पर जो बकरियां चराना है वो सबसे उस बंदे को दिया जाता है जो कुछ नहीं कर सकता। तो So यहाँ पर जो है वो बकरियां चरा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी कोई खास ज्यादा इज्जत नहीं है अपने घर में या ससुराल में। so Moses, and he's not home. He's traveling with the flock a lot, right? और आपको ये भी पता है कि जो बकरियां चराते हैं वो घर बहुत कम आते हैं, वो बाहर ही रहते हैं जानवरों से।
he's out here and he's wandering all over. And apparently he makes it over to here with the flock. And it's, in fact, I can show you a picture. Let's see, visuals. और आप देखें वो मदियान के इलाके में है और वो दूसरी तरफ जो है उस इलाके में सीना के इलाके में आपको नजर आता है बकरियां चराते. Here's pictures of Sinai. और ये देखें सीना का इलाका किस तरीके का है. So that's pretty barren. और आप देखिए यहाँ पर कोई घास फूस नहीं है, कोई कुछ नहीं. Now, that's on the shore, but it's rocky, dry territory. और आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है ये पत्थर सूखे हुए जो है वो पत्थर होते हैं, यहाँ पर कोई हरियाली नहीं वो है. And this mountain is the traditional site of where the burning bush story takes place. It's right here. और ये वो जो है वो पहाड़ है जिसके ऊपर कहा जाता है कि जो जलती हुई जो झाड़ी थी वो नजर आई. और आप देख सकते हैं कि नीचे बिल्कुल छोटा छोटा सा ब्राउन कलर का जो है वो घास है. And you can see little tufts of grass. This is what would have been burning. और शायद यही जो था वो जल रहा था, क्योंकि ये आम तौर पर होता है इस तरह के इलाकों में कि ये जो ग्रास होता है ये जल जाता है. All right, so he goes and he's taking the sheep and he goes to that area and there's a bush burning, but it's not burning up. He goes, I think I got to look at that. So he turns aside, and when he does, you know the story, God talks to him and calls him out of the bush. Moses, Moses. And he goes, yes. English, it's here am I. But in Hebrew, it's behold, I'm here. And what I find interesting is that Moses doesn't run away screaming, talking bush. It's just he just engages in conversation with this bush that's talking to him. यहाँ पर एक चीज जो है वो मुनफरद ये है कि जैसे वो जो झाड़ियां जैसे आपने देखी तस्वीर में गर्मी की वजह से अक्सर उनको आग लगती है, लेकिन यहाँ पर जो झाड़ी को आग लगी हुई थी वो जल नहीं थी रही. तो मूसा जो है वो करीब जाकर देखता है कि ये जो है झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही. तो वहां पर वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है. I've shared with you before, but I've heard the audible voice of God one time in my life. I was 17 years old and I was in my bedroom and God spoke to me audibly out of the light in the ceiling. I have a light in my ceiling in here. I was just lying on my bed, looking at the ceiling thinking, and my light fixture starts talking to me. And I knew immediately who it was. I never went through, oh my goodness, a light's talking to me. I knew it was God. And that's what Moses went through. He knew it was God. And the light fixture said to me, I was thinking about what was I going to do for a living, because I'm a senior in high school, about to go to college and prepare. And the light fixture says, God says, you're going to be a preacher. And my reaction was to laugh. I laughed out loud. I said, I just laughed. And he said it again. You're going to be a preacher. And then I got mad. And I said, no, I'm not. I am not going to be poor the rest of my life. And that was the end of it. Well, of course, God won. I ended up traveling to college to study to be an architect. That didn't last but a couple of weeks.
And after my freshman year in college, I went home and went to a junior college. And then I said, okay, you win. I got in trouble with the law and I was going to get arrested. And I said, God, if you get me out of this, I'll be that preacher you called me to be. And he did. He got me out of it. And so I came to Tulsa and I studied at ORU, and here I am to this day. So when Moses has a bush talking to him and he doesn't react, I know exactly what he's talking about. तो जो खुदा जो है वो बात करता है, वो डॉक्टर वेंस ने जैसे अपनी कहानी बताई कि अब ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि एक जो है झाड़ी जो है उसको आग भी लगी हुई है, वो जल भी नहीं रही और वो बात भी कर रही है। ठीक है, मूसा को इस बात की समझ थी कि जो है वो खुदा बात कर रहा है, और यही बात डॉक्टर वेंस ने अपनी बताई कि वो लेटे हुए थे, तो यहाँ पर अमूमन जो पंखा होता है उसके अंदर ही लाइट लगी होती है, तो उन्होंने अपनी लाइट की तरफ ज़्यादा देख रहे होंगे, तो एकदम उनको आवाज आई कि खुदा ने कहा कि तू मेरी खिदमत करे। तो इधर अमेरिका में ज्यादातर लोग नहीं चाहते क्योंकि पैसे कोई नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान में बड़े पैसे हैं, तो वो सारे कहते कि नहीं। इन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो उसके बाद इन्होंने आर्किटेक्चर के लिए चले गए, वहाँ पर ये अपने कोर्स को शुरू नहीं कर सके, ज़्यादा 2-3 हफ्ते रहा, और इसके बाद किसी वजह से जो है उनको पुलिस पकड़ के ले गई, और फिर उनको याद आई वही वाली खुदा की बात कि किस तरीके से उन्होंने जो है खुदा की खिदमत करनी है। And so, you have your own stories. I imagine Akmal's heard from God. I know that Kenneth has. We all have these stories. And some of us have heard the audible voice. And in my life, I cannot ever deny that God exists. And some people will argue and stuff. I go, but you don't understand. I've talked to him. I've actually heard his voice. And they look at you like you're insane, but you don't care. I know what I know. I know what I heard. And so, yes, God is, end of discussion. I know he exists. तो खुदा जो है जैसे आपसे भी बात करता होगा, और मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस है। दरअसल जो है कि हम खुदा की आवाज़ को क्या समझते हैं, सुनते तो होंगे, क्या समझते हैं कि वो वही है, इस बात को जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर खुदा हमसे बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अगर हम खुदा हमसे बात कर रहे हैं, हम इसको नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब है कि शायद हमें